Good morning, students. Today we are discussing how the do law apply to all. Yes, explanation of this law are applicable all the people in India. Law जो है सभी के लिए जो है applicable है जो लोग इंडिया में हैं. We should not discriminate anyone. हम लोग किसी को discriminate नहीं कर सकते. Even equal before and employment opportunities. So these are some example to show that law are applicable to all the citizens in the country. तो इसलिए जो है law जो है applicable है सभी citizen के लिए जब people those who are living in India. Even politicians are equal before the law. Even the politician peoples are there. Even they are equal before law. See, the above is a clear case of violation of law. As you read in Unit 1, Member of Constituent Assembly were agreed there should be arbitrary cases exercise of power in इंडिपेंडेंट इंडिया. तो यहाँ पे जो है इन द यूनिट 1 हम लोग ने डिस्कस किया था कि आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर जो है इंडिपेंडेंट के लिए क्या है. दे फॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ. तो यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या एस्टैब्लिश किया द रूल ऑफ लॉ के लिए. द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस वॉज दैट ऑल पर्सन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि सारे पर्सन जो है इंडिपेंडेंट है मीन्स फ्री इन इंडिया एंड दे आर इक्वल बिफोर द लॉ. लॉ के सामने जो है सारे जो है इक्वली राइट्स हैं. द लॉ कैनॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन. तो हम लोग किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं कि किसी भी रिलीजियन में जैसे कैस्ट और जेंडर वेदर मेल और फीमेल वी कैनॉट डिस्क्रिमिनेट एनीवन. What the rule of law means in that all law apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. Neither a government official nor a wealthy person, not even the president of the country in the above the law. ठीक है, तो यहाँ कोई भी है तो वो जो है लॉ से ऊपर कोई नहीं है. All are equal before the law. Any crime or violation of law has a specific punishment as well as process थ्रू विच द गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज़ टू एस्टैब्लिश. तो वो वायलेशन अगर कोई उसे करता है तो पनिशमेंट सबके लिए बराबर ही है. बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस? क्या वो हमेशा के लिए होगा? येस. इन एंशियंट इफ यू टॉक अबाउट एंशियंट इंडिया दे वेर इंटरनेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉ. डिफरेंट कम्युनिटीज एंजॉय डिफरेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग दिस लॉ. तो यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ भी बने हैं और सारे जो है अपने अपने कम्युनिटीज़ के हिसाब से दे यूज टू एन्जॉय डिफरेंट डिग्रीज. सी अमॉन्ग देयर ओन अपने बलबूते पे इन सम केसेस द पनिशमेंट द टू पर्सन रिसीव फॉर द सेम क्राइम वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड विथ लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्शली पेनलाइज. तो यहाँ पे जो है अगर दोनों ने गलती की है तो पनिशमेंट जो है सेम है. अगर सेम क्राइम किया है द टू पर्सन रिसीव फॉर द सेम क्राइम बट डिपेंडिंग ऑन देयर बैकग्राउंड. तो उनके बैकग्राउंड से डिपेंडिंग करता है. लोअर कास्ट बीइंग मोर हैशली पेना. जो लोअर कास्ट है तो उसको जो है बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट किया जाता है. दे स्लोली बिगेन टू चेंज एज दिस सिस्टम फॉर लॉ बिगेन टू फर्दर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कॉलोनिकल पीरियड. तो ये चेंजेस क्या हुआ कि कॉलोनिकल पीरियड की बात जो है जिसने भी अपराध किया है जिसने भी जो भी कुछ किया है तो सबको जो है सेम पनिशमेंट है. बिकॉज लॉ इज इक्वल बिफोर द लॉ इज इक्वल टू ईच एंड एवरी वन. इट इज़ ऑफन बिलीव दैट इट वॉज द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया. तो ये ब्रिटिश कॉलोनिस्ट ने जो है ये रूल ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस किया है. हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड, two of which include first that colonial law was arbitrary and second that the Indian nationalists played a prominent role on the development of legal sphere of British India. तो यहाँ पे जो है टू केसेस जो है इंक्लूड किया है. फर्स्ट क्या है colonial law was arbitrary और सेकेंड क्या है कि the Indian nationalists played an important role in the development ऑफ द लीगल स्पेयर ऑफ द ब्रिटिश. तो इंडियन नेशनलिस्ट ने भी जो है इसको डेवलप किया है. वन एग्जाम्पल ऑफ आर्बिट्ररीज दैट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज पार्ट ऑफ ब्रिटिश लॉ is the Sedition Act of 1870.
So British, so it may be asked as one mark question. British law Sedition Act was took place in which year? So you will write 1870. British law is the Sedition Act was taken place in 1870. Now sedition, explanation of sedition is, see, first evaluation of this. So to develop these things, simple to a complex form is to often used to discuss the development of species of plants and animals. In the context of this chapter, it refers the way in which protecting women against domestic violence developed from the urgently felt need to the न्यू लॉ दैट कैन बी एनफोर्स थ्रू आउट द कंट्री. तो पहले ज़माने में जो है वुमेंस को जो है बहुत डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता था, बट नाउअडेज इट हैज़ बीन रिमूव्ड because the law, due to the law which the new law has been enforced throughout the country. Now sedition, this applies to anything that the government might consider or stirring up restraints or rebellion against it. इन सच उन केसेस में क्या होता है, द गवर्नमेंट डज नॉट नीड एब्सोल्यूट एविडेंस. तो उसमें जो है गवर्नमेंट्स को एब्सोल्यूट एविडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन ऑर्डर टू अरेस्ट द पर्सन. अंडर सैनिटेशन एक्ट ऑफ 1870, अगर हम सैनिटेशन एक्ट लगाते हैं 1870 के हिसाब से, द ब्रिटिश हैड ए वेरी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड सैनिटेशन, एंड वॉट इज मेंट was that they could arrest and detain any person they wanted under this एक्ट. तो उनको डिटेन भी करना है, तो इस एक्ट के अनुसार अगर उसको पकड़े गए हैं तो उनको जो है पूरी सबूत चाहिए. द नेशनलिस्ट कंसिडर दिस लॉ आर्बिट्री बिकॉज पर्सन वेर अरेस्ट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन दैट वे सेल्डम क्लैरिफाइड बिफोर हैड एज वेल एज बिकॉज दोज अरेस्टेड वेर ऑफन केप्ट इन जेल विदाउट अ ट्रायल. तो यहाँ पे जो है सेल्डम क्लैरिफाइड जो है, उनको जिस पर्सन को इन्होंने अरेस्ट किया है उसके जो है बहुत सारे रीजंस चाहिए. ठीक है, रीजंस क्यों चाहिए कि अगर उसने अपराध किया तो उसको अरेस्ट किया, अच्छी बात है, उसके बाद उसको जो है जेल भी भेजा सकता. द आइडिया ऑफ सैनिटेशन वॉज वेरी ब्रॉडली अंडरस्टूड विद इन दिस एक्ट. एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्ट विदाउट ड्यू ट्रायल. तो हम लोग जो है बिना ट्रायल, बिना इसके जो है हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते. थैंक यू. इन द नेक्स्ट क्लास we will continue this chapter. Thank you.